Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Dr. AMITAV BANERJEE from Pune. And we have done a show. We were already earmarking what would be the report of vaxxed versus unvaxxed. They're presenting the report to the Congress there in America. The report is out. We are not going detailedly, but how badly American children were suffering. America is a destination of dreams. People go there stating it is freedom and opportunities for all, a land of marvel. But how this is becoming true now? The 10% of the society of the world, they are one and they are trying to destroy the others. Is this so? Now I'll just play the videos fast so that AMITAV BANERJEE Sarji will respond to. And I'll come back to trials and tribulations of, because the same again, American gentleman is trying to fund the trials. And sue the manufacturer for harm, for design defect claims, meaning the claim that the product could have made safer. I mean, literally, look around this room, planes, cars, pharmaceutical drugs, everyone. There's only one product in America. You cannot sue the manufacturer for design defect claim to claim that it could have been made safer. And that are vaccines. I heard, injections, vaccines. My definition of vaccine is any product for which the government needs to give it immunity from harms. To me, that's what a vaccine is. To some prevent infection, some don't. That's what a vaccine is, meaning it can't survive without that immunity, apparently. Why did vaccines get this immunity, which was provided in 1986 under the National Childhood Vaccine Injury Act? Because leading up to 86, there were only 3 routine childhood vaccines, MMR, OPV, and DTP, and they were causing so much harm and causing so much liability that all the manufacturers were going out of business to stop making them. And Congress, instead of forcing those manufacturers to do what every other product manufacturer needs to do in that situation, which is what? A better, safer product. Instead said, you know what? We're just going to give you immunity. We're going to make it so nobody can sue you for those harms. And you can keep selling your product to the American public, no matter how many children it kills or injures. The issue is that immunity was not just given for those 3 products. It was given for any childhood vaccine, routine child vaccine that was developed thereafter. I tell you this not to take issue with childhood vaccines, but to explain to you the regulatory framework in which vaccines have developed over the last 40 years. We have now gone from 3 injections in the first year of life under the CDC schedule in 86 to 29 injections, including in utero, if a child follows the CDC schedule today. Every one of those vaccines, save one, was developed by a pharmaceutical company knowing they would not be responsible for the injuries that are caused by those products. So when you have drug trials with pharmaceutical companies, they care about losing money. They don't want to lose money on their drugs. They often do multi-year placebo-controlled trials before they get on the market because they don't want to end up upside down. They're there to make money. But with vaccine products, because they don't have that financial incentive, they have the disincentive. Almost every childhood vaccine in this country is licensed based on clinical trials with no placebo control, save for COVID-19 vaccine, often days or weeks, up to maybe 6 months of safety review after injection, and are often extremely underpowered. Those trials could never have really confirmed the safety of this product. And my submission to this committee laid out every single vaccine and put them in detail. Yeah. So it is very clear there is no... The amount of aluminum in there is so great. I mean, I remember reading, back in the 1990s, there were a few papers out that were showing that aluminum in TPN, total parenteral nutrition, these were how you would feed preemies who couldn't eat. There was enough aluminum in there that it was affecting their development. And they actually found that if you exceeded 3 to 5 micrograms per kilogram, you would harm their development more for each day they were getting it. Well, 3 to 5 micrograms per kilogram is a tiny amount. The Hep B vaccine has 250 micrograms. So right there, do the math. Let's say a big baby, 10 pounds, 5 kilos, let's say 3 times 5 is 15, but you're injecting 250. That's what woke me up to the folks. We got a problem with aluminum here. So we inject these shots, a needle through the skin into the muscle generally. And the amount of aluminum in there is so great. I mean, I remember reading, back in the 1990s, there were a few papers out that were... Now in Australia too, CDC hit with lawsuit over failure to test cumulative effect of 72-dose childhood vaccine schedule. So it's going on. I'm just trying to show you, and this is... Before, especially for children. And what I've read
they actually started the animal test, and because the animals were dying, they stopped the test. Right. Folks, I think that's important to understand there, that what we're talking about is American people are now the guinea pigs. This is the test program that's going on. They didn't do the human testing, and they stopped the animal test because the animals were dying. And then they turned it out for the public. And we are now looking at businesses that want to mandate that this experimental vaccine be given to people as a condition of their employment. And yet we have this death count that continues to rise. No, I'm just gonna take my. This I'll come back. So these are the two major things which I'm trying to. Henry Ford Health System 2000-2016 VAX versus UNVAX children compared using actual medical records. The study set out to prove vaccine safety. Instead, it revealed the opposite. Key findings: vaccinated versus unvaccinated. Asthma, atopic disease 303% higher in vaccinated and healthy children when it comes to unvaccinated. Autoimmune disease 596% higher, 553% neurodevelopment mental disorders, development delay 328%, speech disorder 447%. That means more harm than any good or immunity with the vaccines. Conditions seen in vaccinated group, 0 in unvaxxed. Vaccinated hundreds of cases, brain dysfunction, ADHD 262 cases versus 0. Learning disabilities, intellectual disabilities, sticks. So unvaxxed it is 0, in vaxxed you are able to see. 17% versus 57% after 10 years. Unvaxxed 17% had chronic conditions, healthy. Vaxxed 57% had chronic conditions, sick. This is after 10 years. This federally referenced study was never published, not because of poor science, but because its results contradicted the policy narrative that vaccines are safe, censored. If it had shown the opposite, it would have been published immediately. If it had shown the opposite, it would have been published immediately. This is what they say. You can choose to vaccinate or not, but no one should ever be forced to take something that causes harm. Health sovereignty is equal to freedom to choose. Health sovereignty means you decide. Medications or not, vaccines or not. The future of health sovereignty is here. Physics measures nutrition. It's all simple truth, real nourishment. That's what we have been saying, natural immunity. And it's all there. Yeah. And this is the major I just received now. Mercury in fish, bad. Mercury in vaccines, good. Formaldehyde in flours, bad. Formaldehyde in vaccines, good. Glyphosate in and on our food, bad. Glyphosate in vaccine, good. Aluminium in deodorant, bad. Aluminium in vaccines, good. MSG in food, bad. MSG in vaccines, good. So these are all, typecast, your brain is conditioned. Impact of childhood vaccination on short and long-term chronic health outcomes in children, a birth cohort study. I've never seen this study before. 18,468 subjects. Henry Ford, like other institutions, has a bias towards the goodness of vaccines. If the results came back demonstrating that the battery of vaccines was associated with chronic diseases, such a result would be particularly convincing. This could be essentially one of the most valuable studies in the field. The vaccinated subjects were over 4 times more likely to have an asthma diagnosis. 600% more acute and chronic ear infections. 4.47 times the amount of speech disorders in the vaccinated compared to the unvaccinated. 5.5 times risk. 616% increase. Learning issues, developmental delays, speech delays, language delays. Amongst the unvaccinated group, there were 0
There was zero brain dysfunction, zero diabetes, zero behavioral problems, zero learning disabilities, zero intellectual disabilities, zero tics, and zero other psychological disabilities. None. It's a big difference. Very important the study sees the light of day. This is devastating. This paper should have been rushed to publication on an emergency basis. We are systematically making kids sick, and not just a little bit sick, very sick. This may be the most important study that has ever been done, and it needs to be published. He knows if he puts his name on this, his career is over. I mean, honestly, like really emotional. Zervo's probably going to lose his job over this. Sir, you want to intervene now before I put up the other videos? हाँ, ये जो है 1986 में जब से इन्होंने ये दिया लायबिलिटी, जो वैक्सीन कंपनी को कोई इंजरी नहीं होगा अगर ड्यू टू वैक्सीन दे हैव गॉट सम लीगल प्रोटेक्शन। उसके बाद से वैक्सीन्स व एक्चुअली नंबर्स बढ़ते गए यूएसए में, क्योंकि कोई लायबिलिटी तो था नहीं, और जितने भी स्टडीज थे दे वर कंट्रोल्ड बाय कैरियर इंटरेस्ट एंड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मा। और जो स्टडी ये बता रहे हैं, हेनरी फोर्ड स्टडी, ये काफ़ी लंबा फॉलोअप था, करीब 18,000 से ज़्यादा बच्चों का, और ये स्टडी में थोड़े अनफेवरेबल जा रहे थे फॉर दी वैक्सीनेटेड, कि उनको एजमा, ऑटो इम्यून डिजीज, क्रॉनिक डिजीज मैनी टाइम्स ज़्यादा था। एंड इसमें वैक्सीन में जैसे बताएं कि प्रिजर्वेटिव या कुछ एडिटिव्स डालते हैं टू इम्प्रूव दी इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ वैक्सीन, लाइक अल्यूमिनियम, मरकरी, कभी कभी फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं उसको इनएक्टिवेट करने के लिए। तो ये सब मेटल्स है विच हैव गॉट सम एडवर्स इवेंट्स। तो हालांकि एक चीज़ है कि जब वैक्सीन, इंडिविजुअल वैक्सीन्स को जब क्वालिटी कंट्रोल करते हैं तो एक परमिसिबल लिमिट रहता है, परमिसिबल लिमिट के नीचे रहता है, सो दे डू दैट चेक इन क्वालिटी कंट्रोल। बट अभी बात यह है कि पहले 3-4 वैक्सीन ही लगते थे जो एसेंशियल वैक्सीन थे, और अभी 29 इंजेक्शन लगते, 29 डिफरेंट वैक्सीन लगते, उसमें 72 जैब्स, 72 से लेकर 90 जैब्स प्राइमरी वैक्सीनेशन बच्चे को 1 साल से 5 साल तक। तो इसमें आप देखेंगे इंडिपेंडेंट वैक्सीन्स के भी अगर थोड़ा थोड़ा मरकरी, थोड़ा थोड़ा एल्यूमिनियम होगा तो ये क्यूमुलेटिव एडिटिव इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें कौन ये कर रहा है, और ये हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कंट्री में कम्युनिकेबल डिजीज बहुत है, संक्रामक बीमारियां ज़्यादा है, वेक्टर बॉर्न डिजीज ज़्यादा है। अभी वेक्टर बॉर्न डिजीज के भी वैक्सीन मार्केट में आ रहे हैं। और एक बात तो यह है कि ठीक है, जब डिजीज का रिस्क है तब लगाओ वैक्सीन, तो एटलीस्ट देयर इज सम जस्टिफिकेशन। अभी कैसा है कि हमारे कंट्री में जैसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंडेमिक एरियाज डिमार्केटेड है, राइस फील्ड्स वगैरह, रूरल एरियाज, गोरखपुर, यूपी, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में। पर क्योंकि जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन अवेलेबल है, तो जहाँ पे नहीं है रिस्क वहाँ पे भी बच्चे को जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन लगा दिया। अभी पूना में ही पिछले महीने, 2 महीने पहले 10 लाख बच्चे को लगा दिया। पूना में 10 साल में कोई केस नहीं हुआ जापानीज एन्सेफेलाइटिस का। तो ये अभी क्या है कि जस्ट बिकॉज द वैक्सीन इज देयर, वेदर सेफ और अनसेफ वाली बात भी नहीं है, लगा देते हैं वो। तो अभी इसका जो अभी जैसे ये स्टडी बता रहे हैं, हेनरी फोर्ड स्टडी जो था, द स्टडी वॉज नॉट कमिंग आउट फेवरेबल फॉर दी वैक्सीन्स। तो उन्होंने स्टडी को पब्लिश ही नहीं किया, क्योंकि जो कैरियर ख़त्म हो जाता, ये उन्होंने बताया है। और अगर तो ये क्या है कि इसीलिए जो अभी जैसे हम कहते हैं कि वी हैव गॉट अ डिजिटल एडवांटेज, वी हैव गॉट अ डेटा डिविडेंड, वी हैव गॉट अ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, एआई है। तो हमको, अभी मैं पढ़ रहा था, कुछ दिन पेपर में आया था कि दे विल यूज द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एंश्योर दैट 100% चिल्ड्रन आर कवर्ड बाय इम्यूनाइजेशन। चलो अच्छी बात है, बट उसी प्लेटफॉर्म में वाई डोंट यू हैव 100% कवर ऑफ एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग एंड लॉन्ग टर्म फॉलो अप बाय अ इंडिपेंडेंट पार्टी एंड विद द डेटा इन द पब्लिक डोमेन। उसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना चाहिए एडवर्स इवेंट्स का। आप अगर 100% रोल आउट करते हैं तो 100% ईच एंड एवरी इवेंट शुड बी कैप्चर्ड। अभी क्या है, इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज लेस देन 10%।
इवन 1% से 10%, 90% एडवर्स इवेंट्स इवन डेवलप्ड कंट्रीज में मिस हो जाते हैं। हमारे कंट्री में शायद 99.99% एडवर्स इवेंट्स मिस हो जाते हैं। बट हमको जल्दी बहुत पड़ी है कि हमको वैक्सीन 100% रोल आउट करो, बट दिस रोल आउट शुड बी सपोर्टेड बाई एडवर्स इवेंट्स, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, डेली मॉनिटरिंग ऑफ ऑल वैक्सीन। नाउ इट इज पॉसिबल विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो यही हमको कहना था, एंड इट शुड बी बाई अ इंडिपेंडेंट बॉडी, क्योंकि हमारे जितने रिसर्च बॉडीज है, आईसीएमआर वगैरह, दे आर इन पार्टनरशिप विद द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। तो हमारे पास तो कोई रेफरी है ही नहीं, एम्पायर नहीं है। अब मैच खेल रहे हो विथ हाई स्टेक्स, मैच फिक्सिंग हो रहा है, पर एम्पायर नहीं है हमारे पास। न्यूट्रल एम्पायर होना चाहिए। तो ये तो पूरा सिस्टम फेलियर है, सेटअप ही बायस्ड है पूरा। Yeah. So remember when Pfizer representatives claimed that nobody was forced to have a vaccine? Tell that to the millions who lost jobs. You actually made a comment that no one was forced to have the vaccination. Who made the comment? Was it Dr. Thur? Senator, I believe I made that comment. You made that comment? Right. You were in Australia during COVID-19. You must have been fully aware that people, nurses, doctors, people to have their jobs, to keep their jobs, were forced to have the vaccination. Now, do you retract your statement that they were not forced? Senator, no, I believe firmly that nobody was forced to have a vaccine. Mandates or vaccine requirements are determined by governments and health authorities. I believe everybody was offered an opportunity to get a vaccine or not get a vaccine. I don't believe that anybody was forced to take a vaccine. A lot of Australians will disagree with you on that one. Dr. Thru, you actually made a comment that no one was forced. So no one was forced. यहाँ पर भी इसी तरह हुआ. Now let us go to this study from Japan also. 数人数分のデータが蓄積されております。者がオレンジで、接種者と非接種者を正確に比べようということをしてみますと、非接種者はね、山はできないっていうのは、これ当たり前なんですよね。打っても別になくなるわけじゃない、打っていませんので、何の問題もなく、フラットになるわけです。問題は接種者の方なんですけれども、緑のグラフ。それが初め低いんですが、1週間、2週間は少ないんです、むしろ。A new study out of Japan is shaking everything up. Reportedly tracking over 18 million people. It compared outcomes of vaccinated versus unvaccinated. The takeaway, the more doses you stack, the more your risk profile changes, and not in a good way. Now, whether you trust the data or not, one thing is undeniable. Our bodies are under assault from every angle. From medical interventions to pesticides in food, to heavy metals in water, to everyday environmental toxins. It's layer upon layer. Here is the truth nobody tells you. Your body can detox, but in today's world, it is overloaded. When toxins build up, your immune system, energy, and even mood all take the hit. That is why I use the detox pack daily. It's my insurance policy against things I can't control there. So this is the latest study, sir. And Yeah. your comments on the both. ये तो देखिए, ये कोविड वैक्सीन का तो सबसे ज़्यादा सेटबैक है, क्योंकि ये इस टाइप का तो खैर इन्होंने बहुत ज़्यादा में किया है। 18,000 में इन्होंने इंडिविजुअल लेवल में फॉलो अप किया है कि जितने बूस्टर्स 18 million 18 मिलियन। तो ये हमारे यहाँ 18 मिलियन क्यों नहीं हो सकता है, जबकि वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड वी बोस्टेड ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन रोल आउट. Why we don't have this data? If Japan can have it, why we can't have it? What is the problem in that? Number one. Number two, ये तो मैं 3 साल से डेटा पॉपुलेशन लेवल में जापान का भी मैंने प्रोजेक्ट किया था। 1 साल बिफोर वैक्सीन रोल आउट केसेस एंड डेथ्स, 1 साल आफ्टर वैक्सीन रोल आउट जापान का. इट वाज वेरी ऑब्वियस देयर वर स्पाइक्स इन केसेस इंक्लूडिंग एंड स्पाइक्स इन डेथ्स इन जापान, मलेशिया, श्रीलंका, इजराइल, जितने भी कंट्रीज के हमने ये डेटा हमने पब्लिक डोमेन में डाला है, हमने पेपर पब्लिश किया है, हमने एम्स में प्रेजेंटेशन दिया है, बिकॉज ये दे आर जस्ट
propaganda. They are not going by, at least they should investigate and they should pause. जब ये डेटा आया है तो क्योंकि ये डेटा कोई इन लोग क्या करते हैं अभी जो इसमें हियरिंग में भी आया था WHO ने मैथमेटिकल मॉडल पे बेस पे लैंडसेट में पेपर छाप दिया बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडल सो मेनी मिलियंस ऑफ लाइफ सेव्ड जिसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है पर इट इज इनफ टू कंफ्यूज द कॉमन सिटीजन एंड कमिंग फ्रॉम हाई ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO CDC तो पीपल उसको क्रेडिबिलिटी मिल जाता है पर WHO CDC में जो अभी काफी दिनों से जो रॉट हो गया है ये आम लोगों को पता नहीं है लेकिन अब सब कुछ बाहर आ रहा है ना सर नथिंग इज लेट अस होप पर खाली वहीं पे हो रहा है हमारे कंट्री में क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे कंट्री में जो वैक्सीन लगा था कोविशील्ड वो मैन्युफैक्चरर ने खुद उसको बंद कर दिया तो हमारे कंट्री में फिर भी अभी हमारे उल्टा हो रहा है मैन्युफैक्चरर ने एडमिट कर लिया कि हमारा वैक्सीन में एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं पर हमारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि सेफ था एक ICMR का डिजाइन पुअरली डिजाइन स्टडी अभी इसमें भी डिजाइन की बात हो रही थी अभी मैं हियरिंग में सुन रहा था बैडली डिजाइन स्टडी से क्लियर कर देते वैक्सीन को तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही किया है जब मैन्युफैक्चरर बोलता मैं वैक्सीन विड्रॉ कर रहा हूँ भाई अभी मेरे को और ये नहीं रिस्क लेना है मैन्युफैक्चरर तक डर गया है पर हमारे साइंटिस्ट अभी भी सपोर्ट किए जा रहे हैं कि नहीं वैक्सीन से तो नहीं हो रहे हैं कुछ एडवर्स इवेंट्स तो और जो कोई एक BHU एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में कुछ स्टडीज फॉलो अप कर रहे थे उनको धमकी दिया ICMR ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने धमकी दिया अभी तो साइंस इज नो लॉन्गर अभी इट इज ओनली बुलिंग एंड दादागिरी पे उतर आए हैं इन लोग यानी पब्लिक उसके खिलाफ जाएंगे we are making this video to enlighten citizens so that they act it is their fundamental right to health and life Before you inject your child, a decision that is irreversible, I wanted to let you know the scientific facts about this genetic vaccine, which is based on the mRNA vaccine technology I created. There are 3 key issues that parents need to understand. The first is that a viral gene will be injected into your children's cells. This gene forces your child's body to make toxic spike proteins. These proteins can cause permanent damage in children's critical organs, including their brain and nervous system, their heart and blood vessels, including blood clots, their reproductive system, and this vaccine can trigger fundamental changes to their immune system. The most alarming part about this is that these damages, once they occur, are irreparable. You can't fix lesions within their brains. You can't repair heart tissue scarring. You can't repair a genetically reset immune system. And this vaccine can cause reproductive damage that could affect future generations of your family. The second thing that you need to know about this is the fact that this novel technology has not been adequately tested. We typically need at least parents, before you inject your child. they're not allowing the entire video to go on so he is the one who has invented mRNA vaccine now he is the one who is enlightening us about the parents injecting vaccines sir your comments अभी फिक्र ये है रेड्डी साहब कि अमेरिका में अवेयरनेस हो गया कि mRNA इज अनटेस्टेड इट कैन कॉज सीरियस इरिवर्सिबल हार्म जो स्पाइक्स बनते रहेंगे और बॉडी के सब ऑर्गन में जाएंगे और जो डैमेज होगा वो इरिवर्सिबल होगा हार्ट में मायोकार्डाइटिस होगा स्कार बन जाएगा तो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है और सडन डेथ हो सकता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से ब्रेन टिश्यू डैमेज कर सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज कर सकता है जिसमें कि फर्टिलिटी वगैरह एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है इसका हमको फिक्र यही है कि इंडिया में अभी mRNA के जो मैन्युफैक्चरर्स है इस टेक्नोलॉजी के जो प्रोमोटर्स हैं दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया नाउ क्योंकि अभी बात चल रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी mRNA वैक्सीन बनेगा और जीका के लिए भी बनेगा और निपा के लिए भी बनेगा तो हमको यही है बिकॉज इंडिया इज़ द हैप्पी हंटिंग ग्राउंड बिकॉज कम्युनिकेबल डिजीज बहुत है और वेरी लार्ज पॉपुलेशन है और रेगुलेटरी बॉडीज इनके मुट्ठी में है दे आर अंडर हैवी कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट
तो हमको एक्चुअली दिस शुड बी अ क्वेश्चन इन पार्लियामेंट. सिटीजन शुड आस्क देयर रिप्रेजेंटेटिव. एंड ये इशू कोई ना ऑपोजिशन पार्टी डिस्कस कर रहा है, रूलिंग पार्टी डिस्कस नहीं कर रहा है. एंड इनफैक्ट अभी तो और जोरों शोरों से वैक्सीन प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज दिस इज द इफेक्ट ऑफ द सेटबैक इन द वेस्ट. They are with great force, they are trying to compensate by promoting the vaccine market in developing countries. एंड जैसे मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जो वैक्सीन का डिजीज का भी डेटा पेश करो, कितने डिजीज हो रहे हैं, उसका क्या मोर्टेलिटी है और कहाँ पे हो रहा है, तब वैक्सीन को डिप्लॉय करो. अभी वैक्सीन जैसे मैंने एग्जांपल दिया जापानीज एंसेफेलाइटिस का, ये जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे आप उस वैक्सीन को स्कूल में लगा रहे हो. एक प्रकार से स्कूल के बच्चे रिफ्यूज भी नहीं करते और ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं वेदर पेरेंट का कंसेंट लिया कि नहीं. स्कूल टीचर तो नहीं देना चाहिए, पेरेंट का कंसेंट लेना चाहिए. और दूसरी बात है, एचपीवी वैक्सीन की आपने बात करी है. उसके जो 23,000 बच्चे को लगाए थे उसमें से 7 लोगों का डेथ हो गया था. तो 7 आउट ऑफ 23,000 आप हिसाब लगाओ, अगर करोड़ों को लगाओगे तो. और इसका फिर डेटा को फॉलो अप क्यों नहीं कर रहे हो? 23,000 जो लड़कियों को लगाया था, जैसे फोर्थ स्टडी में फॉलो अप किया था, आपके पास ऑलरेडी आपका एक एक्सीडेंट हो गया है. पर जो बाकी 23,000 को जो 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला था कि ये गलत तरीके से ट्रायल किया है, तो इस ट्रायल का डेटा को फिर से उन लड़कियों को अभी फॉलो अप कीजिए कि लॉन्ग टर्म एडवर्स इवेंट्स क्या है. शॉर्ट टर्म में तो 7 लड़कियां मर गई 23,000 में, मतलब दैट इज द सीरियस एडवर्स इवेंट्स विच वाज एविडेंट ड्यूरिंग ट्रायल. व्हाट अबाउट द क्रॉनिक इफेक्ट्स? समबडी शुड आस्क फॉर दी दिस डेटा फ्रॉम दिस 23,000 गर्ल्स. तो ये सब हमारे पास डेटा है. पर अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसको एक नया टर्म यूज किया है, वैक्सीन हेजिटेंसी. वैक्सीन हेजिटेंसी है, वो स्टिग्मेटाइज कर देता है. हेजिटेंसी तो होगा नया टेक्निक में, साइंस में तो हर चीज में है. अगर साइंटिस्ट को हेजिटेंसी नहीं है तो दैट साइंटिस्ट इज नॉट प्रैक्टिसिंग साइंस, दैट साइंटिस्ट इज प्रैक्टिसिंग डॉगमा, फेथ. डॉगमा और फेथ और साइंस में फर्क क्या हो गया? हर नए टेक्निक को क्वेश्चन करना चाहिए, हर नए वैक्सीन को क्वेश्चन करना चाहिए. उसको आप बोलोगे कि वैक्सीन हेजिटेंसी है, दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, वैक्सीन हेजिटेंसी. इस टाइप के साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करते हैं. सो विच आर मतलब एक प्रकार से वो ग्रुप थिंक होता है, मास हिप्नोसिस होता है कि भाई हाँ, हम एंटी साइंस हो गए अगर हमने वैक्सीन का. इट इज प्रो साइंस. टू क्वेश्चन न्यू टेक्निक इज प्रो साइंस, इट इज नॉट एंटी साइंस. आई मीन ये तो साइंस का, साइंस में तो हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए. तो उसको आप बोलोगे एंटी साइंस है, तो फिर डॉगमा और फेथ और इसमें क्या रखा है? फिर हम फिर बस वही विभूति में लगाओ, विभूति की जगह अंदर डाल दो. विभूति तो कम से कम बाहर लगाते हो, ये तो आप अंदर डाल रहे हो, इन्वेजिव हो गया ना. इट इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, विच इज अ प्राइमरी ह्यूमन राइट, that nothing should go inside my human body without proper my consent and my informed assurance. अब इससे अच्छा तो हम बोले विभूति लगाओ, काला टीका लगाओ, एटलीस्ट बाहर लगा रहे हो आप. बट इफ यू आर रियली गिविंग समथिंग इनसाइड, इट शुड बी प्रॉपरली टेस्टेड. आई एम नॉट सेइंग कि देना ही नहीं, टेस्ट करो, उसका प्लस माइनस दोनों ये देखो, कितना रिस्क है, कितना बेनिफिट है. लॉन्ग टर्म डेटा को मॉनिटर करो आप, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करो. और एक वैक्सीन आप सेफ है, पर वो सेफ आपने उस वैक्सीन को किया, एक वैक्सीन का 10 वैक्सीन ऐड करोगे तो 10 का क्यूमुलेटिव जो भी है एल्यूमिनियम मरकरी वो तो बढ़ जाएगा ना, और वॉट एवर अदर केमिकल्स वॉट एवर. सो उसको किसने टेस्ट किया? आपने एक वैक्सीन को क्लियर किया, 2 को क्लियर किया, अभी तो 72 जैब्स आ गए हैं, अभी तो रोज एक वैक्सीन ऐड हो रहा है. तो वो टोटल का कभी ये किया है क्या? देखो लिफ्ट में एक आदमी चढ़ता है, 2 आदमी चढ़ता, लिफ्ट का भी कैपेसिटी रहेगा कि नॉट मोर देन 5 या नॉट मोर देन 10. अब लिफ्ट में आप 20 आदमी को घुसेर दो, 30 को घुसेर दो तो लिफ्ट गिर जाएगा. तो सेम थिंग यू आर डूइंग विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. यू हैव गिवन द क्लियरेंस फॉर 1 वैक्सीन क्वालिटी चेक में. अब वो उसको बोला कि आप इसको 10 वैक्सीन के साथ इसको ऐड करोगे. हैव यू टेस्टेड दैट? इफ यू हैव टेस्टेड दैट, डेटा शुड बी अवेलेबल. वंडरफुल. डेटा शुड बी अवेलेबल इफ यू हैव टेस्टेड दैट. एंड किस तरह हमको उल्लू बनाया जाता, आप देखिए कोविड-19 99.99% रिकवरी ऑन इट्स ओन, क्वारंटाइन, उसको भी वैक्सीन लगाया. कितनी उल्लू बनाए हमको, क्योंकि अपना सहज रोग निरोधक शक्ति, द नेचुरल इम्यूनिटी इटसेल्फ इज केपेबल टू ओवरकम
disorders like that. When the natural immunity itself, and we are a tropical country, we are close to all seasons. And why should you need vaccine for everything? And that too universally. HPV, why should you have universal vaccine? What are the reasons, causes for HPV? And only in that targeted group, and that too after proper trial. 72nd Joint Parliamentary Committee report is out. Why they have not registered any cases against? Then Modi was the chief minister in Gujarat, Vadodara, and here YS Rajshekar Reddy in Khammam when the trials happened. And again, it was Bill Gates. Now the same Bill Gates is now through Modi trying to promote mRNA vaccine because America has understood. Western countries, Europe and all, they have understood. Even Africa is not allowing these type of vaccines to be administered to their children. Then why India? Why India? Why Modi and Gates? What Modi and Gates have in common? So people, you have to understand. This is to enlighten you. You are the one who has to take a decision. What would happen to India if all those vaccines, now the data is out, unvaxxed versus vaccine, those vaxxed. Now unvaxxed are safe and healthy, vaxxed with so many complications. Now would anyone dare to go for those vaccines? And that too now, Pfizer comes out and says, it has never enforced, never forced. But during COVID-19, the jab was a must to have a job. All these things are coming about. Even Modi, he used to sign certificates. Suddenly, he withdrew. Now he says, even from the Supreme Court also. So for that reason, people become aware and see to that you understand the contents in that vaccine and how important it is for your children and how important it is to continue boosters. Only then you go ahead. Otherwise, your children's future is in jeopardy. Thank you very much, sir. And do support DRTSPR channel, Citizens DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channel. They're all in larger public interest only. My number is 9440465339. Anyone can connect, and we are ready to host you from wherever you are, provided the show you have evidences as per Constitution, as per rule of law, with no enmity against individuals nor animosity against parties or organizations. Thank you very much, sir. Thank you.